Yes, guys, the next chapter is budgetary control. अब budgetary control में basically it is extension of मतलब it is like standard costing only. ये भी it is also a cost control device for us. The only difference is standard में standard को base बनाया जाता है, standard costing में यहाँ पे budgets को base बनाया जाता है. Standard means what your cost should be. Budget means what your cost will be. आप जैसा चाहो. एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द पीरियड आपका एक्चुअल डेटा पहले स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर हुआ करता था, वेरिएंस निकलते थे. अब वो बजट के साथ कंपेयर होगा, वेरिएंस निकलेंगे. मतलब पहले मैं ये कहता था कि आई शुड बी प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इन 10, आई एक्चुअली इनकर्ड 11. अब मैं ये बोलता हूं कि आई विल बी प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट इन 10, आई विल बी प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट इन 10, आई हैव इनकर्ड 11. शुड बी, विल बी is the basic difference between standard and budget. अब हमको करना क्या है? Generally they don't ask you a variance analysis because variance analysis is majorly asked in standard costing. Budgetary control में इनका फेवरेट काम है आपसे बजट बनवाना. तो एक कैटेगरी इनकी आती है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट. एक कैटेगरी इनकी आती है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट. When you prepare budget for multiple levels, it is called as flexible budget. When you prepare budget only for one level, it is called as fixed budget. When you prepare budget for multiple levels, it is called as flexible budget. When you prepare budget for only one level, it is called as fixed budget. अब ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग लेवल की जरूरत क्या है. आपके पास तीन ऑप्शंस है, 80,000, 90,000 और 1 लाख. आप तीन ऑप्शंस लेके बैठे हो. तीन ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करनी है क्वांटिटी टू बी सोल्ड. आप 80,000 बना सकते हो, 90,000 बना सकते हो, 1 लाख भी बना सकते हो. आपको सिर्फ ये जानना है कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी हम लोग सिलेक्ट करें. अब कॉमन सेंस ये कहता है कि वही क्वांटिटी सिलेक्ट करोगे जो आपका प्रॉफिट बढ़ा के देगी. तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट किस पे आएगा? 1 लाख पे? नहीं, दैट इज अ मिथ. ऐसा हम लोग सोचते हैं मगर होता नहीं है. ऐसा हम लोग सोचते हैं मगर होता नहीं है. क्यों? क्यों? क्योंकि यार कभी कभी ज्यादा यूनिट्स बेचने के लिए मार्केट शेयर तोड़ना पड़ता है. तो मतलब किसी और का शेयर कट करना पड़ेगा. देखो ये मार्केट है, ओवरऑल 2 लाख यूनिट्स बिकते हैं. मैं बेचता हूं 80,000. आई एम सेलिंग 80,000. ओवरऑल 2 लाख यूनिट्स आर सोल्ड बाय ऑल द मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूडिंग मी एंड माय कॉम्पिटिटर्स. मेरा शेयर 80,000 है. तो इसका मतलब बाकी 1,20,000 मस्ट हैव बीन सोल्ड बाय ऑल माय कॉम्पिटिटर्स पुट टुगेदर. अगर टोटल 2 लाख में से 80,000 मैं बेचता हूं, मतलब बाकी 1,20,000 आर सोल्ड बाय ऑल माय कॉम्पिटिटर्स पुट टुगेदर. अब मुझे मेरा शेयर 80 से 90 करना है, तो ये तो 2,10,000 होने वाला है नहीं. मार्केट साइज विल रिमेन सेम. तो मुझे अपना शेयर 80 से 90 पे लेके जाने के लिए किसी और का शेयर कट करना पड़ेगा. आई हैव टू ईट आउट समवन एल्सेस शेयर. समझ में आ रहा है? और ये तभी होगा जब मैं ह्यूज प्रमोशनल एक्टिविटी करूंगा, ब्रांड एम्बेसडर हायर करूंगा. मतलब माय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट विल बी मोर. या फिर मैं डिस्काउंट पे डिस्काउंट दूंगा. आई विल ट्राई टू अट्रैक्ट द कस्टमर बाय गिविंग डिस्काउंट्स. तो मेरा रेवेन्यू कम हो जाएगा. तो जरूरी नहीं है कि 1 लाख के लेवल पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज. तो मैं तीनों का कैलकुलेशन करूंगा. 80,000 पे प्रॉफिट कितना हो, कॉस्ट कितनी होगी, प्रॉफिट कितना होगा. 90,000 पे कॉस्ट कितनी होगी, प्रॉफिट कितना होगा. 1 लाख पे कॉस्ट कितनी होगी, प्रॉफिट कितना होगा. फिर अगर मुझे पता चलता है 90,000 इज गिविंग मी मैक्सिमम प्रॉफिट, then if I realize that 90,000 is giving me maximum profit, my next year's budget will be only for 90,000 fixed budget. This year I prepared 3, so flexible. समझ में आ रहा है? Now, when you're dealing with fixed and flexible budget, there is a difference only in terms of presentation. One column, fixed budget. More than one columns, more than one levels of activity, variable, मतलब flexible budget. आपको सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है. आपको सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है. If it is variable cost, you focus on per unit. If it is a fixed cost, you focus on total. If it is a variable cost, you focus on per unit. If it is a fixed cost, you focus on total. And if you come across a semi-variable cost, when you see characteristics of 2 in 1, what are you supposed to do? Go for the breakup. Split that into 2 parts, variable and fixed, so that for variable, you can focus on CPU, and for fixed, you can focus on total. Got it?
Good morning, everyone. So, we completed fixed budget and flexible budget in the last session. I'll just give you all important points related to that. Just write down all the points one by one. Give the title. Give the title. Fixed budget, flexible budget. Give the title, fixed budget, flexible budget. Underline that. Fixed budget and flexible budget. Underline that. Right on the first line. First point. Point number 1. Whenever a budget is prepared, whenever a budget is prepared, for one level of activity, whenever a budget is prepared for one level of activity, whenever a budget is prepared for one level of activity, it is considered as fixed budget. It is considered as fixed budget. And whenever it is prepared for, and whenever it is prepared for multiple levels, and whenever it is prepared for multiple levels, it is called flexible budget. It is called flexible budget. It is called flexible budget. Second point. While preparing these budgets, total cost must be split. Total cost must be split. Total cost must be split as variable and fixed. Total cost must be split as variable and fixed, so that for variable cost, so that for variable cost, so that for variable cost we can focus on cost per unit. So that for variable cost we can focus on cost per unit.
and for fixed we can focus on total, and for fixed we can focus on total. We can focus on total. That's it. This is what you're supposed to remember. इतना ही याद रखना है आपको. फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल में वैसे तो कोई खास फर्क नहीं है. अगर मल्टीपल कॉलम्स के लिए आएगा तो फ्लेक्सिबल बजट, एक ही कॉलम के लिए आएगा तो फिक्स बजट. इट इज गोइंग टू बी दैट सिंपल. तो अगर फ्लेक्सिबल बजट या फिक्स बजट कुछ भी आता है, बेसिकली स्प्लिट योर कॉस्ट स्ट्रक्चर इनटू टू पार्ट्स. फॉर वेरिएबल यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन सीपीयू, क्योंकि क्वांटिटी बदलेगी तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरा सीपीयू मेरे पास होगा. If there is any change given, I will change CPU. बाद में क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद I will be able to get the total cost. अगर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं है तो I'll simply write down CPU, multiply by quantity will give me total variable cost. तो अगर चेंज है तो CPU चेंज करना है, अगर चेंज नहीं है तो भी CPU ही फॉलो करना है. फिक्स में यू आर सपोज टू फॉलो टोटल. अगर चेंज दिया तो भी टोटल में ही चेंज करना है, सीपीयू में देखने का ही नहीं है, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ फिक्स कॉस्ट. ओके, नाउ ये था आपका फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल का कैलकुलेशन. बट हर एक बिजनेस के लिए ना अलग अलग फंक्शंस होते हैं. And in that case, sometimes we have to deal with functional budgets as well. क्योंकि अगर हर बिजनेस के अलग अलग फंक्शंस होंगे तो एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे फंक्शंस भी तो प्लान करने पड़ेंगे, राइट? सो हाउ डू वी गो अबाउट इट? इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल. मेरी बात को ध्यान से सुनना. क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं? प्रोडक्शन कैन बी वन फंक्शन, सेल्स कैन बी अनदर फंक्शन. बट टू एग्जीक्यूट दीज मेन फंक्शंस मुझे रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है. सो परचेज ऑफ मटेरियल इज वन फंक्शन. कंजम्पशन इज अनदर फंक्शन. लेबर कॉस्ट इज अ थर्ड फंक्शन. अरेंजिंग ओवरहेड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनदर फंक्शन. तो काफी सारे अलग अलग फंक्शंस होंगे जिनके बारे में हमको प्लान करना पड़ेगा. अब ये सारे फंक्शंस कनेक्टेड होते हैं. ऑल दिस फंक्शंस आर एब्सोल्युटली कनेक्टेड. अगर आपको एक मिल गया तो आपको अब फिर लाइन लग जाएगी. अब सोचो, मुझे शर्ट्स मैन्युफैक्चर करने. क्या मैन्युफैक्चर करना है मुझे? शर्ट्स. तो टेल मी हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ should I purchase? I know the question is vague, but क्या क्या ख्याल आते हैं दिमाग में? सबसे पहला ये ख्याल आता है कि भाई क्लॉथ परचेस कर रहा है, ठीक है, पर कितना कंजम्पशन पैटर्न है? 2 मीटर कपड़ा लगता है मुझे एक शर्ट बनाने के लिए. 2 मीटर कपड़ा लगता है मुझे एक शर्ट बनाने के लिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? 2 मीटर कपड़ा लगता है एक शर्ट बनाने के लिए. तो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे. फिर सवाल उठता है कि भाई कितना प्रोड्यूस करना है. तो प्रोडक्शन इस तरह से होना चाहिए कि मेरे पास 2000 का क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए. 2000 शर्ट्स का क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास होना चाहिए. इतना मुझे प्रोड्यूस करना है. अगेन वी आर लॉक्ड. तो फिर हमको सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि हमको कितना बेचना है. We'll have to first find out कि कितना बेचना है.
एक बार पता चल गया कितना बेचना है तो हम लोग आराम से ढूंढ सकते हैं प्रोड्यूस कितना करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जैसे अगर मुझे पता चलता है 10,000 यूनिट्स बेचने हैं, इफ आई वांट टू सेल 10,000 यूनिट्स, I will produce 10,000 units. It's that simple. If I want to sell 10,000 units, I will have to produce 10,000 units. नहीं 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 नहीं, बेचने के बाद मेरे पास 2,000 का स्टॉक चाहिए, ठीक है, तो you better produce 12,000 units. अगर 10,000 यूनिट्स बेचने के बाद you want a stock of 2,000 with you, that means 12,000 यूनिट्स बेचने चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे पास 1,000 का स्टॉक पहले से पड़ा है। अरे भाई तो फिर 11,000 प्रोड्यूस कर ले। सो द मोमेंट आई गेट क्वांटिटी टू बी सोल्ड, आई कैन इजीली फाइंड आउट प्रोडक्शन क्वांटिटी बाय प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन बजट। बाय प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन बजट। एंड वो कैसे मिलेगा? क्वांटिटी टू बी सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सब्ट्रैक्ट होगा और मुझे मिलेगा क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। यहाँ तक कोई डाउट? तो मतलब मुझे जब भी फंक्शनल बजट बनाना पड़ेगा, द फर्स्ट थिंग दैट आई शुड फाइंड आउट इज सेल्स बजट। सबसे पहले सेल्स ढूंढ लो, हाउ मच यू वांट टू सेल, ऐड क्लोजिंग, subtract opening, you will get to know how much you want to produce. And the moment you realize how much you want to produce, you can proceed further with whatever you want. Because the moment you realize how much you want to produce, you can easily find out how much you want to consume. Raw material consumption budget. The moment you realize you want to consume something, suppose मुझे 20,000 किलो मटेरियल कंज्यूम करना, तो हाउ मच शुड आई परचेज? 20,000 किलो, 20,000. What if I want stock of 5,000 after consumption of 20,000? That means I should purchase 25,000. What if I already have stock of 2,000 kgs with me? Then you better purchase 23,000. तो जैसे हमको प्रोडक्शन की क्वांटिटी मिली, वैसे परचेज की भी मिल सकती है बाय प्रिपेयरिंग परचेज बजट। By preparing purchase budget. So you first find out quantity of raw material to be used, that means consume, add closing stock to that, subtract opening stock from that, you will come to know quantity to be purchased. Quantity to be purchased को you will multiply it by price and you will get your purchase cost in terms of rupees. I hope you understood this. फिर वो एक मटेरियल हो तो एक के लिए आएगा, अगर 3 मटेरियल है तो सेम थिंग हैज टू बी रिपीटेड फॉर ऑल द 3 मटेरियल्स। 3 कॉलम बना के। इफ यू हैव ओनली 1 फिनिश गुड्स ये आएगा, इफ यू हैव मोर देन 1 फिनिश गुड्स तो एक से ज्यादा कॉलम्स बना के खत्म करो, बट द बेसिक कोर कंटेंट विल रिमेन सेम।
So raw material consumption budget, once you get, you can easily prepare raw material purchase budget. A raw material consumption budget will give you raw material purchase budget. In fact, the moment you come to know the production budget, you can find out number of hours required. You can also find out number of hours required, and the moment you realize your number of hours required, you can easily go for wages budget as well as overheads budget. So if you really want to crack functional budget question, this is all you need. Sales production, consumption purchase, sales production, hours labor, sales production, hours overheads. You're not supposed to think about anything else. Plus you also have a formula to know, you have a format to know quantity to be produced, quantity to be sold plus closing minus opening, of course, of finished goods will give you quantity to be produced. And raw material purchase is consumption quantity plus closing minus opening will give you quantity to be purchased, which will be multiplied by price to give you purchase cost. So guys, copy this part first. Give the title functional budget. Give the title functional budget first. And copy this. Have you understood this whole chart? Trust me, whether it is inter CA or final CA, inter CMA, final CMA, any exam, you just need to know this for cracking down any functional budget question. आपका CMA का एग्जाम हो तो भी, CA का एग्जाम है तो भी, just know this much, you can crack any question on functional budget. Is it done? Yes, sir. Till purchase cost? Till here? Trust me, nothing else is required when it comes to functional budget. Shall I proceed, guys? Okay, shall I start? Now the question arises, how to get sales quantity. Now, if you want to find out sales quantity, generally there are three categories. Either they will give you
See, please understand one thing. Whenever you deal with functional budget, you need to first find out sales quantity. So either that quantity will be given to you, or else they will give you budgeted sales figure, along with budgeted selling price. Sales divided by selling price will give you the answer. Or else they'll give you sales plus they will give you cost structure and profit. Are you getting me? They will give you sales quantity straight away. Fine, we'll pick it up, we'll start. Otherwise, they will give you budgeted sales and budgeted selling price. Company wants to earn 10 lakhs at a budgeted selling price of 100. So 10 lakhs divided by 100, 10,000 units will be the quantity to be sold. Or else they'll give you the cost structure, breakup of cost, material cost, labor cost, overheads, fixed overhead, variable overhead, factory overhead, admin selling overheads. Just get the total, add profit to that. You will be able to determine the selling price. And the moment you get selling price, you will find yourself in the second scenario. You can easily get the answer. Are you getting me? Plus, there will be a special situation. The special situation will be explained. But majorly, all questions can be solved with the help of this. अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो वो सेल्स के 3 कैटेगरी में कवर नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका सोल्यूशन बताएंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 3. Notebook number, page number. Shall I start? A company is engaged in the manufacture of specialized sub-assemblies. Oh my God. You are manufacturing sub-assemblies. That means for you, sub-assemblies will be your finished products. Correct? The company envisaged that in the month of December, sales took a pattern of 3:4:2. मतलब quantity 3:4:2 के रेशियो में है of sub assemblies ACB, MCB, DP. तो ACB, MCB, DP अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो they will be sold in the ratio 3:4:2. अब आपको सेलिंग प्राइस दी है ACB, MCB, DP की, एंड बाद में लिखा है कंपोनेंट्स रिक्वायरमेंट. कंपोनेंट का मतलब रॉ मटेरियल. कंपोनेंट का मतलब रॉ मटेरियल. कंपोनेंट का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल. करेक्ट? तो 4 टाइप के मटेरियल्स है. बेसबोर्ड, IC08, IC12, IC26. तो बॉस 3 टाइप का फिनिश गुड्स बना रहे हो और 4 टाइप का मटेरियल लग रहा है. मटेरियल की प्राइस भी दी है आपको. आगे डायरेक्ट लेबर टाइम एंड वेरिएबल ओवरहेड्स रिक्वायर्ड फॉर ईच सब असेंबलीज आर. लेबर का टाइम भी दिया है. ग्रेड ए, ग्रेड बी नाम के 2 कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स है. 8 आवर्स, 6 आवर्स, 4 आवर्स. ये लास्ट वाला आवर्स नहीं है, रेट है. 864 hours will be required. 16, 12, 8 hours will be required. ग्रेड ए का रेट 5 per hour, ग्रेड बी का रेट 4 per hour. Variable overheads per unit 36, 24, 24. 36, 24, 24 per unit. The laborers work for 8 hours in a day for 25 days a month. मतलब 200 hours per month काम होता है. एक दिन में 8 घंटा काम करते हो और एक महीने में 25 डेज काम करते हो. एक महीने में 25 डेज काम करते हो और एक घंटे का अगर 8 रुपए, एक दिन में अगर 8 घंटा काम करते हो, दैट मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ 1 month यू आर प्लानिंग, यू आर वर्किंग फॉर 200 hours.
ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दी, ओपनिंग स्टॉक दिया, दे हैव गिवन अस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में क्या आएगा? अच्छा, ये फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और ये मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, करेक्ट। Fixed overheads amounted to 7,57,200 and monthly profit target is 12 lakhs. 12 लाख रुपए का मंथली प्रॉफिट कमाना है, 12 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है 7,57,200 की फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के बाद। मतलब कुछ भी बोलो, यू कैन नॉट अर्न प्रॉफिट विदाउट रिकवरिंग फिक्स कॉस्ट, करेक्ट। तो इन शॉर्ट हमारा रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना है? फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी? 7,57,200 और प्रॉफिट कितना चाहिए? 12 लाख। सो बॉस, आई वांट कंट्रीब्यूशन टू बी 19,57,200। आई वांट कंट्रीब्यूशन टू बी 19,57,200। यहां तक समझ में आया? आई वांट कंट्रीब्यूशन टू बी 19,57,200। The company is eager for reduction of closing inventories for December of sub-assemblies and components by 10% of quantity as compared to opening stock। मतलब ओपनिंग से 10% कम क्लोजिंग स्टॉक होगा आपका, ओपनिंग से 10% कम क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है। तो सीधा 90% अप्लाई कर देंगे। 5 टाइप के बजट्स मांगे, सेल्स बजट मांगा है, प्रोडक्शन बजट मांगा है, मटेरियल का यूसेज, मटेरियल का परचेज और मैन पावर बजट मांगा है, शोइंग नंबर ऑफ वर्कर्स एंड अमाउंट ऑफ वेजेस। अभी सिंपल बताऊं, ये लास्ट 2 भी बोलते तो भी बाकी सब तो वैसे भी बनाने पड़ते, करेक्ट। जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन द क्वेश्चन, आई विल बी बैक इन 5 minutes। यस, वेलकम बैक। आगे सब लोग चलो। सो व्हाट यू हैव इन दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या दिया है? what do we need? Sales, production, consumption, purchase. Sales, production, hours, labor, right? So in which way we have to go for sales budget। और मैंने कहा था sales budget के लिए there are 3 scenarios। either sales quantity will be given, जो इसमें नहीं है। they may give you sales value along with selling price। we have selling prices but we don't have value। और तीसरा, कॉस्ट स्ट्रक्चर देंगे प्रॉफिट के साथ, यू कैन फाइंड आउट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने की जरूरत क्या? सेलिंग प्राइस तो पहले से मेरे पास। सेल्स वैल्यू मिसिंग है, दैट मींस हमने जो डिस्कस किया था, दैट विल नॉट वर्क आउट एंड दैट इज व्हाई आई एम सॉल्विंग दिस। बट वी हैव सम स्पेशल इंफॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन जो आपने ऑलरेडी लिख दी है। And what is that special information? What is that special information? You have contribution to be earned। अगर आपको टोटल कंट्रीब्यूशन 19,57,200 कमाना है, अगर आपको टोटल कंट्रीब्यूशन 19,57,200 कमाना है, बराबर, तो यू हैव 3 फिनिश गुड्स विथ यू, एसीबी, एमसीबी, डीपी, बराबर। तो तीनों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मालूम होना चाहिए। इफ यू नो कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज 3 प्रोडक्ट्स, you can easily equate it with 19,57,200 to find out
cost structure to find out other things related to this question. एक बार मुझे contribution per unit मिल गया तो I can equate it with 19,57,200 and we can find out quantity वगैरह सब कुछ. So that is a special point. तो अगर आपको वो 3 सिनारियोज नहीं मिल रहे सेल्स वाले जो मैंने बताया तो दे विल गिव यू समथिंग स्पेशल दैट विल बी यूटिलाइज. समझ में आया? चलो, सो लेट्स गो फॉर स्टेटमेंट ऑफ contribution per unit. ACB, MCB, and then DP. Why ACB, MCB, and DP? We need contribution. Contribution will be of finished goods, so we need finished goods columns. It is that simple. Is that part clear? Okay. सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल. मैं एक काम कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन चाहिए तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट स्ट्रक्चर करना है तो पहले कॉस्ट स्ट्रक्चर ढूंढ लेते हैं. कॉस्ट स्ट्रक्चर ढूंढने के बाद we'll compare that with selling price and we'll be able to find out contribution per unit, right? Chalo, you have 4 different types of materials. Baseboard, which is purchased at 60, IC08, IC12, IC26. क्या प्राइसेस है बताओ? 20, 12 and 8. बराबर. सबसे पहले ये ढूंढ लेते हैं कि कंजम्पशन रिक्वायरमेंट क्या है. आई टोल्ड यू, अगर आपको फिनिश गुड्स पे फोकस करना है तो फिनिश गुड्स पे फोकस करो, अगर आपको मटेरियल पे फोकस करना है तो मटेरियल पे फोकस करो. लेकिन एक बार आपने डिसाइड कर लिया दैट यू आर फोकसिंग ऑन मटेरियल तो फिर सारे मटेरियल एक साथ कवर कर लेना. And if you have decided to focus on finished goods, then see to it you are covering all finished goods. एक पाव रेल में एक पाव जेल में नहीं, दोनों. एक स्टैंडर्ड पॉलिसी आपको फॉलो करनी ही होगी. देयर इज नो चॉइस, अदरवाइज फिर मिस्टेक हो जाएगी. जैसे चलो मैं फॉलो कर रहा हूं फिनिश गुड्स को, तो आई विल गो दिस वे. व्हाट डू वी नीड फॉर प्रोड्यूसिंग ACB? 1842. 1842 is needed. Okay, so we need 1842. बोलता कुछ और है, लिखता कुछ और है. क्या लिख दिया? अरे मैंने क्वांटिटी उठाई और उसको मल्टीप्लाई किया प्राइस से. if I need 1, 8, 4 and 2 units of raw material multiplied by pricing will give me the cost of 1 unit. 1 to 10, 6. 1 2 10 10 6. 1 2 10 6. 1 2 4 8. 1 2 4 8. This is what we have. चलो फटाफट टोटल ले लो.
बोलो जल्दी। So 284, फर्स्ट वन, yes. 268 and 212. have you clearly understood this part? So This will be followed by direct labor. This will be followed by direct labor. Unskilled, skilled. अनस्किल्ड का रेट क्या है? नहीं सॉरी, ग्रेड ए ग्रेड बी है ना. ओके, टेल मी द रेट. अरे बोलो भाई. 5 and 4. हाँ 5 and 4. 5 and 4. So this will be 5 per hour. This will be 4 per hour. Okay. Now see the requirement of number of hours. Grade A, 8 hours, 6 hours, 4 hours. 8 hours, 6 hours, and 4 hours. I'm going by categories. 8 hours, 6 hours, 4 hours. Have you understood this? What about B? Tell me number of hours requirement. Tell me number of hours requirement quickly. 16, 12 and 8. So for 16, for 12, and for 8. This is what we'll have, correct? Yes. Yes, sir. So 104, 78, 52 will be your labor cost. And for variable cost, there is no need to find out anything. बोलो. This will be your total variable cost per unit. Tell me. Four 24, 370, 288. Okay, very good. Let us write selling price on the next line. Selling price 520, 500, 350. 520, 500, 350 will give you contribution on the next line. Selling price minus variable cost per unit. So that comes to 96, 130, 62.
Is this part clear? Is this clear? So guys, you already know per unit contribution. You already know per unit contribution. Am I right? Hello? Yeah. You already know per unit contribution, plus you also know the total contribution. So you can equate these two, no? देख लो. Let the total quantity be X. And जी, let the total quantity be X. Now if I assume total quantity to be X, you should know that you have three categories of finished goods which will fulfill your requirement of total contribution. ACB, MCB, DP. और रेशो क्या दिया है बोलो? 3:4:2. यानी कि 3/9, 4/9, 2/9, because the total is 9. तो यहाँ पे हो जाएगा 3/9x यूनिट्स, ये हो जाएगा 4/9x यूनिट्स, और ये हो जाएगा 2/9x यूनिट्स. ये होगी आपकी क्वांटिटी अगर आप टोटल क्वांटिटी को x मानते. मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी पर यूनिट, multiplied by contribution per unit. अब क्वांटिटी को आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिलेगी? टोटल कंट्रीब्यूशन की फिगर 288x upon 9, 520x upon 9, 124x upon 9. ये होगा आपका कंट्रीब्यूशन हर एक प्रोडक्ट का. हमको इंटरेस्ट है टोटल कंट्रीब्यूशन. टू 88x प्लस 520x, डिनोमिनेटर कॉमन है ना, प्लस 124x अपॉन 999, 27 नहीं आएगा. डिनोमिनेटर विल बी 9 ओनली. अभी बोलो मुझे टोटल क्या है, बोलिए टोटल. 932x, x मत भूलना. 932 divided by 9, and we all know that this figure should be 19,57,200. This figure should be 19,57,200. 932x upon 9. So 1957,200 into 9 upon 932. बोलिए. 18,900. So 18,900 is value of x, and x was your total quantity. If x is your total quantity, again this will be split. If this is your total quantity, this needs to be split, na?
ACB, MCB, DP 3:4:2. So this will be 6,300 units. This will be 8,400 units. And this will be 4,200 units. 6,300, 8,400, 4,200 units. This is your quantity sold. मिल गया आंसर. 6,300, 8,400 and 4,200. This is going to be your quantity sold. इस क्वेश्चन में इन्होंने सेल्स बजट मांगा है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू. सिर्फ उस रीजन की वजह से 520, 500, 350, उस एक रीजन की वजह से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं. 520, 500, 350. And generally we stop at quantity sold क्योंकि हमको quantity sold ही चाहिए होती है. लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने सेल्स की वैल्यू भी मांगी है तो वैल्यू भी देनी पड़ेगी. बोलिए. $2,76,000. 42, 32 lakh. 26. Is this right? 14,70,000. How much will be the total sales value? Total 49 lakh. budgeted sales. बोलिए. 89 lakh 46. 89,46,000. 89,46,000. अरे समझा. Since they asked me to prepare sales budget in terms of quantity as well as value, we found out value. Otherwise, किसी भी normal question के लिए we were quite okay with quantity. आगे बढ़े. Yes. चलो. Since we are done with sales budget, we can go for the next budget, and that is production budget. Production of finished goods. और अपने पास 3 finished goods है. ACB, MCB, DP. Part B. Production budget. ACB, MCB and DP. ACB, MCB, DP. We will have to start with quantity to be sold. $6,300, 8,400, 4,200. Closing stock is given to be opening stock minus 10%. तो एक काम करते हैं हम लोग. We'll write down opening stock.
ओपनिंग स्टॉक, बोलो। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया है, फिनिश गुड्स की बात कर रहे हो तो 800, 1200, 2800। ये हुआ ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग 10% कम, टेन परसेंट कम मतलब 90%। हैव यू अंडरस्टूड दिस? समझ में आया क्लियरली? So this will be 6220, 8280, 3920. I hope this is clear. आगे बढ़े? Yes. एक मिनट। हाँ, चलो। So after production budget, any which way we are supposed to go for consumption budget, and you all know that consumption and purchase can be clubbed together. Consumption and purchase can be clubbed together, so we will be going for consumption budget only, but the name will be consumption and purchase, क्योंकि हम लोग को तो वैसे भी क्लोज ही उसको क्लब ही करना है। द मोमेंट वी फाइंड आउट क्वांटिटी टू बी कंज्यूम, उसी में हम लोग ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, उसी में से माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक टू गेट अ वैल्यू ऑफ, टू गेट अ क्वांटिटी ऑफ परचेज। So C and D will be clubbed together, raw material, consumption and purchase budget. Since I have 4 different types of materials, since I have 4 different types of materials, 4 plus 1 is the format. मैंने बताया था आपको, जिसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसके कॉलम्स, समझ रहे हो क्या बना रहे? Why do you need material?
for producing 6220 units of ACB, for producing 8280 units of DP, 8280 units of MCB, and for producing 3920 units of DP. Correct? Look at the consumption requirement for ACB. 1842. 1842. Consumption requirement for ACB is 1842. Okay. So 1, 8, 4, 2 is your requirement for ACB. Similar requirements you have for other type of material, other types of finished goods. Plus you also know their respective quantity structures. बोलिए consumption requirement now. One, two, 10, 6. 1, 2, 10, 6. And what about the third one? 1, 2, 4, 8. Okay then. Give me the consumption pattern, consumption quantity now. This is baseboard, I'll calculate. 6220, 8280 and 3920. बोलिए. Give me IC08 column. $49,760. 49,760. 16,560. 16,560. 7,840. 7,840. Lovely. And 24,880. 24,880. 82,800. 82,800. 15,680. 15,680. Okay. 12,440. 12,440. 49,680. 49,680. 31,360. 31,360. Lovely. The addition of all these figures column wise will give you quantity to be used. Quantity to be used.
बोलिए। और कोई है? 18,420, 18,420, 74,160, 74,160, 23,360, okay, 93,480. 93,480, Yes, sir. okay. Now to this, we are going to add closing stock. Just give me 1 minute. चलो, done. Now, again, you're going to face the same situation. You're going to face the same situation. The situation is you need closing stock, which is opening minus 10%. तो यहां पर भी वही काम कर लेते हैं. We'll write down opening stock first. That will give us purchase quantity multiplied by price will give us purchase cost in terms of rupees. Correct? क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन में आ जाओ. 16, 12, 6 and 4. 16, 12, 6 and 4. I hope you are clear with it. ओपनिंग का 10% कम है ना, ले लिया. So give me quantity to be purchased. Give me quantity to be purchased. $18,260. 18,260. 74,040. 74,040. 1,22,760. Okay. 93,080. Okay. And you guys already know the pricing. 60, 20, 12 and 8 if I'm not wrong. 60, 20, 12 and 8. Yes. So tell me the cost now.
बोलो 10,95,600. 10,95,600. Second one. 14,80,800. Okay. 14,73,000. 1473 120. 7,44,640. So your total purchase cost will be 47 lakh Hmm. 94,160. I hope this is clear. स्टैंडर्ड पैटर्न आपको सिर्फ 4 चीजें ढूंढनी है. सेल्स, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, परचेस, या फिर सेल्स, प्रोडक्शन, आवर्स, लेबर. आंसर आ रहा है. टेल मी इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन दिस. And the last one is it's a manpower budget. Now, when it is manpower budget, that means it is related to labor. If it is related to labor, labor के columns होने चाहिए. लेबर के टेबल पार्ट ई. मैन पावर, that means labor budget. Grade A, grade B. Why do you need workers? Again, for producing 6220 units of A, 8280 units of B, 3920 units of C. मतलब ACB, MCB, DP. Correct? So guys, I need number of hours multiplied by 6220, number of hours multiplied by 8280, number of hours multiplied by 3920 for category A. And the same thing will be repeated even for category B. Tell me number of hours for A, grade A. 864. 864. So 8 hours, 6 hours, 4 hours. And what about B? 16, 12, 8. 16, 12, 8. Okay. Get the answer now. बोलिए. 49,760. 49,760. 99,520. B. 520. 99,520. Okay. 49,680. 49,680.
99,360. 99,360. 15,680. 15,680. 31,360. 31,360. Okay. So how many hours are required? Total hours required. 1,15,000. 1,15,000. 120. 2,30,000 to 240. 2,30,000 240. Guys, are you clear with it? Yes, sir. Yes. Now, in any normal question, I would have multiplied this with rate. अगर ये कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन होता तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता रेट से, जैसा मैंने इस प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, लेकिन इन लोगों ने हमसे मांगे हैं नंबर ऑफ वर्कर्स। मतलब इनको ये डिसाइड करना है कि बॉस आज इनको पता चला सो मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड टू बी वर्क फॉर। इनको ये भी पता है कि एक महीने में काम कितना होता है। अगर एक महीने में 200 घंटा ही काम होता है तो एक वर्कर सिर्फ 200 घंटे का प्रोडक्शन कर सकता है। और एक वर्कर अगर 200 घंटे का प्रोडक्शन कर सकता है तो 115 120 के लिए कितने वर्कर चाहिए? 255 पॉइंट 255 हाँ 575.6. 575. 575.6. Now, are you going to hire a half worker, 0.6 worker? No. So basically that indicates that all said and done, but 576 workers need to be, 576 workers are required to be hired. और यहाँ पे 115 1151.2. 1151.2 तो कितना लिखूं? 1152 लिखना। मैथ्स का राउंडिंग ऑफ टेक्निक अप्लाई मत करो यहाँ पे, समझाता हूं। इफ यू हायर 1151 वर्कर्स, कैलसी लो, 1151 वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय 200, मैक्सिमम कितने आवर्स का काम होगा? मैक्सिमम कितने आवर्स का काम होगा? 40 घंटे का शॉर्टेज आएगा ना। तो मैथ्स का राउंडिंग ऑफ टेक्निक अप्लाई नहीं करने का, यू विल हैव टू टेक वर्कर टू द हायर साइड। सो गाइज, मुझे प्लानिंग की वजह से ये पता चला कि बॉस इतने मेरे आवर्स की रिक्वायरमेंट है, एक बंदा इतना काम कर सकता है, तो मुझे इतने वर्कर्स चाहिए। और जब मुझे पता चल गया कि आई विल नीड 576 and 1152 workers, each one will be paid for 200 hours. So how many hours will be paid for? It will be 115 200 and 230 400. Is this clear? देखो काम कितना हो रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। If I have hired 576 workers, I have to pay each and every one of them for 200 hours. उतना पैसा तो मुझे देना ही होगा। I cannot tell them कि तेरे को मैंने फ्रैक्शनल था तो तेरे को राउंड ऑफ करके ले लिया।
If a worker is hired, he will be paid for 200 hours. So all 576 workers will be paid for 200 hours. So 115 200 will be your 115 200 will be your total hours paid for. This will be multiplied by rate. कितना 8 and 4 है? Five and four. No, 5 and 4. 5 and 4. Okay. That gives you labor cost to be incurred. Tell me. 5,76,000. 9,21,600. This is what you're going to spend next year. So you should know the total of it. Total labor cost. बोलिए. 14,97,600. That's the advantage of preparing labor budget. It does not only give you the cost to be incurred, but it also tells you the requirement of staff. बॉस, मैं पहली बार बिजनेस लॉन्च कर रहा हूँ, बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे लेवल ऑफ एक्टिविटी डिसाइड करनी है, तो मुझे पता चलता है कि मुझे 576 एंड 1152 वर्कर्स हायर करने ही होंगे. आई कैन टेक डिसीजन रिगार्डिंग दिस. और अगर मैं इतने वर्कर हायर करता हूं तो हर एक वर्कर को मुझे 200 घंटे का पैसा तो देना ही है बॉस. आई डोंट हैव अ चॉइस. हर एक वर्कर को मुझे 200 घंटे का पैसा देना ही है. तो काम भले ही इतना हो, पैसा तो इतना जाएगा जेब से गारंटेड पेमेंट के हिसाब से. तो जो पैसा जाएगा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. आई जस्ट नीड टू नो द कॉस्ट दैट आई विल बी इनकरिंग, द कॉस्ट, द अमाउंट दैट आई विल बी स्पेंडिंग. इन्होंने नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं पूछा होता तो मां कसम इसी को मल्टीप्लाई कर दिया होता हमने, नंबर ऑफ आर्ली रेट से, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. बट सिंस दे आस्क्ड अस, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स 576 एंड 1152 है तो बॉस हर एक को 200 घंटे का पैसा जाएगा. तो इवन इफ आवर्स वर्कड आर लेस, आवर्स पेड विल बी मोर. Is that part clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then that was your functional budget. I hope this is crystal clear. Sales, production, consumption, purchase. Sales, production, hours, labor. Sales, production, hours, overheads. आपको इन बॉटम में क्या मिल रहा है? मटेरियल परचेज, लेबर एंड ओवरहेड्स, तीनों मिल रहा है. You can easily find out total cost for yourself for the next year. That's the advantage of budget. समझ में आया? शॉर्ट में याद रखना, फिक्स फ्लेक्सिबल में स्प्लिट योर कॉस्ट एज वेरिएबल एंड फिक्स्ड. वेरिएबल के लिए पर यूनिट, फिक्स के लिए टोटल. और फंक्शनल बजट में सेल्स, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, आवर्स, लेबर, सेल्स, प्रोडक्शन, आवर्स, ओवरहेड्स. और सेल्स क्वांटिटी के लिए 3, either it will be given or they will give you sales and selling price, or they will give you sales and you will have to prepare a cost sheet. और अगर ऐसा नहीं हुआ तो they will give you some hint. जैसे इसमें तीनों कैटेगरीज में हम लोग बैठ नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी कंट्रीब्यूशन दिया था, तो कंट्रीब्यूशन वाज द स्टार्टिंग पॉइंट. आई हैड टोटल कंट्रीब्यूशन, तो आई फाउंड आउट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड आई सॉल्व इट. सो दैट वाज योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, मैन पावर बजट, जिसमें डिफरेंट पॉइंट ये था, क्वांटिटी मांगी थी. सो राइट ऑन अ नोट, सिंस नंबर ऑफ वर्कर्स वर आस्क्ड, since number of workers were asked,
we did not prepare labor budget. Since number of workers were asked, we did not prepare labor budget. We did not prepare labor budget on the basis of we did not prepare labor budget on the basis of hours worked or required. We did not prepare labor budget on the basis of hours worked or required, but on the basis of hours paid. But on the basis of hours paid. Each worker each worker will be paid for 200 hours. Each worker will be paid for 200 hours. And therefore we had to find out 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 total hours paid to all the workers. Total hours paid to all the workers.